analysis. Can you hear me? Can you hear me, student? Yes, ma'am. There is network issue, that's why I'm asking. Okay, so today we are going to see very important part from the Excel, that is what if analysis. What today we are going to see? Today we are going to see what if analysis. So what is what if analysis? We will see it. See student, whenever you want to do a analysis of your data, at that time you will use a what if analysis. Analysis means what? Suppose I want to do an analysis of myself. So how I can do the analysis of self? I will just verify that what is today's sale, what is tomorrow's sale, what was the yesterday's sale. I will do the comparison. Or if I want to increase my sale, what should I increase? Should I increase the price or should I increase the quantity? Should I increase something like such? This is an example. Many times we need to do analysis of our data. That is called as a what if analysis. This what if analysis is included in data tab. Student, can you view my screen? Yes, ma'am. Okay. So in data tab, yesterday we saw data validation and consolidate. Correct? Today we are going to see the next thing, that is what if analysis. So below this also they have given a description of what is analysis. Okay, so what is in what if analysis? If you are online on the Excel, you can check it simultaneous with me. Student, आपका Excel open है तो आप मेरे साथ करो. If you click on what if analysis, there are 3 tabs: scenario manager, goal seek, and data table. So what we are going to see in what if analysis? Scenario analysis, then goal seek, and then data table. These 3 things we will see in what if analysis. Okay. So first we will see this goal seek. What is a goal seek? We will see it. See, as an example, we will take the example of, suppose we have one product. Okay, I just type here product name. Suppose product name is rice. Okay, I have my shop, grocery shop, and product name is rice.
सबको दिख रहा है? Okay, product name is rice. I will put here a quantity of product as well as price of product. Okay, suppose rice is of 70 rupees per kg. Price कैसी हमारी? Per kg. And quantity. Okay, quantity is in kilogram, in kg. Suppose rice is of 70 rupees per kg and I sell, selling का है ये मेरे record, okay? I sell 60 kg of rice. So what would be the total price? Yes, total price. How you will calculate the total price? You will put the formula is equal to what? Quantity multiply price, correct? So you will get the total price. Got it, student? So this is a simple formula, but now this is the analysis record, no? So what I want to do analysis on this, that कि मुझे total price 6000 चाहिए. I want total price. How much? अभी कितनी आई total price? 4200. If I want my total sale, sorry, don't write total price. You can write here total sale. Okay. So total sale मुझे 6000 का करना है. If I want to do a total sale of 6000, then what to do? I want to do the analysis of this. Now, suppose price is fixed. So I can increase the quantity. Correct? I can increase the quantity. So how much quantity should I increase? So my total sale will be 6000. So for this, we will do a goal seek option. What we will do? We will do a goal seek option. So now suppose I will go into the data, click on what if analysis and click on goal seek. Okay. Wait, student. So as soon as I click on a goal seek, what happened? One dialog box came here. So in this dialog box, there is a set sale. Okay. First option is a set sale. So what we want to set into the sale? Student, just a minute. Okay, student. Sorry for disturbance. So whenever you will click on data and what if analysis and goal 6, one dialog box will come. So in set sale, you will set what these
टोटल सेल प्राइस कहाँ पे है, टोटल सेल यहाँ पे. सो आई क्लिक ऑन दिस. ओके, सो मुझे ये सेट करना है कितना, व्हाट वैल्यू आई वांट हियर, आई वांट अ वैल्यू हियर 6000. करेक्ट. सो बाय चेंजिंग सेल, विच सेल, अभी हमें पता है प्राइस इज फिक्स, so we can change only the quantity. Correct. So we'll click here and click on the quantity cell and close it. Okay, and click on OK. Okay, so what happened, if you want a 6000 rupees sale, then what should be the quantity, quantity should be a 85 kg. Quantity should be a 85 kg or 85.71 kg. इतनी क्वांटिटी से हमें सेल करना पड़ेगा तभी मेरा टोटल सेल 6000 हो सकता है. Shall I repeat it? Student, are you getting it? Yes, student. Yes, ma'am. समझ Yes, में आ रहा है? What Yes, is ma'am. goal seek? repeat, ma'am, please. Okay, I'll just undo it. थोड़ा टफ जाएगा आपको लेकिन I'll repeat it. Okay. So what you have a rice as a product. You have a price of rice is 70 rupees per kg and you want to sell a 60 kg. 60 kg आपने सेल किया है राइस का, तो what will be the total sale, 4200. But as an suppose my shop is there, तो मुझे अभी एनालिसिस करना है, अगर मुझे टोटल सेल 6000 का करना है तो how much kg should I sell? So what I will do, I will go into the data in what if analysis and goal seek. As soon as click on goal seek, one dialog box has opened that there are 3 rows: set cell, to value and by changing cell. So what is in set cell? क्या सेट करना है हमें? We want to set a total sale. Correct. So we will click here and total sale कहाँ पे है? G15, I think it is G14. Okay, I'll click on this G14. Okay, again I will close it. Now to value कितनी करनी है हमें? Suppose now I want that my sale should be 7000 rupees. 7000 rupees का sale होना चाहिए. So I'll put to value is 7000. By changing sale, which sale? सपोज वी कीप प्राइस एज अ फिक्स. प्राइस हमेशा फिक्स होती है प्रोडक्ट की, हमेशा चेंज नहीं होती. बट राइट नाउ वी सेट प्राइस एज अ फिक्स वैल्यू एंड चेंजिंग वैल्यू क्या है? क्वांटिटी. क्वांटिटी अगर चेंज की तो हमारा सेल 7000 तक जा सकता है क्या? ऐसा हमें एनालिसिस करना है. सो इन बाय चेंजिंग सेल आई विल क्लिक ऑन दिस रेड एरो. विच सेल? क्वांटिटी. ओके, आई विल क्लिक ऑन क्लोज. ओके, तो तीनों के वैल्यूज आ गई. देन आई विल क्लिक ऑन ओके एंड ओके. सो क्या हुआ? 7000 सेल आने के लिए मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए? हाउ मच क्वांटिटी आई वांट? 100 kg. इट विल कम ऑटोमेटिकली. गॉट इट? दिस इज द एनालिसिस. किसी बिग डेटा के लिए भी आप ये एनालिसिस कर सकते. I'm telling you using some small amount of data only. Okay, so this is called as a goal 6. म्हणजे आपका गोल सेट किया है आपने और उसके लिए आपको एनालिसिस करना है. You can keep a quantity as fixed and price can be a vary. Okay, कैसे हो सकता है ये? सपोज क्वांटिटी इज फिक्स, क्वांटिटी 60 रखनी, प्राइस अगर चेंज कर रहे हैं तो हम हमारे गोल तक जा सकते हैं क्या? विल सी. सपोज आई वांट अ सेल ऑफ 8000. ओके, आई विल गो इन डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल 6. नाउ व्हाट? सेट सेल. क्या सेट करना है हमें? टोटल सेल. सो आई विल क्लिक ऑन दिस टोटल सेल, क्लोज. टू वैल्यू कहां तक? सपोज 8000 तक मुझे मेरा सेल होना चाहिए. ओके ओके, देन बाय चेंजिंग सेल नाउ वी विल कीप दिस क्वांटिटी एज अ फिक्स बट विल चेंज द प्राइस. मेरे पास 60 ही
केजी राइस है और उससे ही मुझे 8,000 सेल करना है. सो व्हाट शुड आई चेंज? आई शुड चेंज द प्राइस. सो आई क्लिक ऑन द प्राइस सेल, देन क्लोज एंड क्लिक ऑन ओके. ओके, सो कितना प्राइस मुझे रखना पड़ेगा? आई शुड कीप द प्राइस ऑफ 133.33 rupees. Then only I will reach to my target, that is 8,000 rupees sale. Got it, student? Student, please reply me. Unless and until you reply, I can't get that are you getting or not. Yes, ma'am. Can you repeat once this? Again, third time. Already I have repeated 2 times. It is somewhat difficult, but you can write a notes for this. जैसा मैं कर रही वैसे आप notes भी लिख सकते हैं इसकी. Again I will repeat it. Okay. Okay, this is quantity, this is price and this is total sale. Total sale कैसे निकाला आपने देखा, मैंने क्या किया, इन दोनों का multiplication किया सिर्फ. So you get the total sale. Okay. Now what I want my total sale as a 6,000 rupees. So 6,000 rupees कैसे आएगा मेरा total sale? मेरा target है कि next week में मुझे 6,000 का sale करना है. So what should I change? Either quantity or price. तो पहले हम ऐसा करते हैं कि we will keep price as a fix and quantity as a vary. ओके, सो प्राइस अगर फिक्स है तो कितनी क्वांटिटी मुझे सेल करनी पड़ेगी जब मैं 6,000 रुपीज का सेल करूंगी. सो फॉर दैट एक्सेल हैज गिवन अस excellent tab, that is data, what-if analysis and goal seek. Okay, so what is in set value? Set क्या करना है हमें? Total sale. So I will click here and click on the total sale. जो भी सेल का एड्रेस है वो यहाँ आ रहा है. करेक्ट? सेल का एड्रेस कैसे आया? I just click on that sale. Okay, I'll close it. Next, अगर आप एक्सेल ओपन है आपका तो आप करके देखो, तब तक आपको आएगा नहीं. स्टूडेंट प्लीज डू विथ मी. Yes, ma'am. टू वैल्यू कितना सेल चाहिए हमें? 6,000. So I'll keep your value as a 6,000. Then by changing sale, which sale we want to change? Quantity. Price हमने fix रखी है, price तो हमेशा change नहीं होती है. That's why we keep price as a fix. So I will click on this red arrow और कौन सी value vary है हमारी? Quantity. Close. तो तीनों ही रो में अभी वैल्यूज आ गई. सेट सेल, टू वैल्यू एंड बाय चेंजिंग सेल. नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके एंड ओके. क्या हुआ? तो कितनी क्वांटिटी मुझे बेचनी चाहिए? 85 kg. देन ओनली माय सेल विल बी 6,000 रुपीज. Yes, ma'am. Got it. Are you doing with me this? Yes. Okay. I'll give you 2 to 3 minutes. Do it. You have problem? Ask me. Done? Yes, ma'am. Okay. Now next thing is a data table. We will see a data tables. What is data tables? Now in this goal seek एक ही क्वांटिटी है या फिर एक ही प्राइस है, उस पर हम चेक कर रहे हैं हमेशा. नाउ आई वांट डिफरेंट क्वांटिटीज.
I want to analyze my data. अगर ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा, like such. This is analysis purpose. No, analysis कैसे करते हैं, वैसे ही. ये अच्छा है क्या नहीं, ये अच्छा है कि नहीं, ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, like such. So I want a multiple analysis, multiple type of analysis. That time I will use a table, data tables. So what is data tables? For that we will take some different example here. So we will take here quantity. Suppose quantity हमें अलग अलग लेके देखना है, ओके, और उसके लिए टोटल सेल देखना है. We want to see for different quantities what will be the total sale. Okay, suppose quantity may be the 80 kg, quantity may be the 85 kg, quantity may be 90 kg, quantity may be 120 kg, quantity may be 150 kg. So multiple values के लिए मुझे अभी मेरा total sale देखना है. ये किया तो क्या होगा. Okay, so how to do? We can use here a table. Okay, we'll just we'll use here table. How to use it, we will see it. First of all, we will take this total sale here. जो भी हमारी पहली प्राइस है, whatever the price before we have taken, for that price and quantity, the total sale is this one. So we will take as an reference. Analysis करना है इससे हमें. That's why we'll take this total sale here. How to take reference से ले रहे हैं, हम टाइप भी कर सकते थे 4,200, but I want to take it by reference. How will you can take it by reference? You will take equal to and click on this cell and press enter key. क्या हुआ, जो भी टोटल सेल था वो वहां पे आ गया 4,200. तो ऐसा क्यों किया, why I have done like such? डायरेक्ट भी लिख सकती थी कॉपी करके, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया. कैन यू गिव मी आंसर? ये मैंने रेफरेंस क्यों लिया? एनीबडी प्लीज रिप्लाई. Yes, ma'am. हाँ, क्यों लिया रेफरेंस मैंने? मैम इसका फॉर्मूला फिर हम नीचे भी आई थिंक फिर चेंज होगा फिर उसका टोटल सेल. हाँ हाँ, correct. Means suppose I will change your value. If I'll give your quantity as a 50, यहाँ पे जो value change हो रही है total sale की, see here the total sale value get changed here, correct? So it will reflect here also. ये जानबूझ के हाईलाइट कर रही हूँ आपको. Suppose I will take here quantity as a 80. So total sale यहाँ जो change हो रहा है that will reflect here automatically. No need to again copy and paste. So this is also one learning for you. If you want to take a value, if you take a value from other table or other sheet, always use it as a reference. Don't copy and paste it. रेफरेंस से किया तो जो भी चेंज उस मेन टेबल में हो रहा है that will automatically reflect on the second table. Okay, that's why I took a reference here. रेफरेंस लेना ज्यादा मुश्किल नहीं. क्या क्या मैंने यहाँ आपको फॉर्मूला यहाँ नजर आ रहा है, इक्वल टू and I click on that cell. That much only. Okay, got it? Yes, ma'am. So here 60 था हमारा. Now what is use of table, we will see. Now these are the different quantities, and for these quantities I want to take a total, I want to calculate a total sale. So what to do? We will go into the data, then what if analysis and data table. So row input.
क्वांटिटी कहाँ पे लिखी हमने? इन कॉलम. ओके, हमने क्या किया है? व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेक अ क्वांटिटी इनटू द कॉलम. सो रो में अभी कुछ है क्या? नहीं. सो वी विल कीप रो एज एम्प्टी. ओके, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है डेटा टेबल का, उसमें रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल इज देयर. करेक्ट. So right now our quantity is in column, so we will keep empty in row. So in column, what we will do, we will take this value. Okay, we want a quantity in column, so I will click here in the quantity and I will close it. Okay, and click on OK. Wait, something is invalid. Okay, wait, student, something get wrong here. Okay, student, sorry for disturbance. So can you view my screen? Yes, ma'am. Yeah. So for,
this data table, we need to select this data. That mistake I make. मैंने select नहीं किया था data. We need to select the data, then go into the data. Okay. Then click on data table. Now we don't want a row value right now because quantity is into the column value. So we'll go into the column input cell. And there I will click on this red arrow. Then column में क्या है हमारी quantity. So I will click on the old quantity. Okay, क्योंकि why? Because from the old result we want to new result. करेक्ट, जो भी ओल्ड रिजल्ट में किया है. सपोज हियर देयर आर 1000 ऑफ रिकॉर्ड, पहले से एक रिकॉर्ड के लिए करके रखा है, तो वी कैन डायरेक्टली रेप्लिकेट दैट रिजल्ट इनटू द न्यू रिकॉर्ड. सो आई विल क्लिक ऑन द क्वांटिटी सेल. ओके, देन क्लोज हियर एंड क्लिक ऑन ओके. सो व्हाट हैपेंड? फॉर रिमेनिंग data value, for remaining table value, you will get a total sale. If quantity is 80 kg, total sale will be the 5600. If it is 85, total sale will be the like such. If it is 90, total sale will be the like such. Okay, are you getting it? Yes, student. Yes. If you change the value here also, it will replicate directly. Suppose I will take here 52, it will replicate. कभी भी ये पहले, if you have created it, any time you can change your value and you can analyze your data. Suppose instead of 90, I will keep here 91, then the value will change automatically. Okay. So this is called as a data table. कितना भी बड़ा टेबल हो, उसमें एक ही क्लिक में आपका पूरा एनालिसिस आता है. दिस इज स्मॉल टेबल. सपोज दीज आर 1000 रिकॉर्ड्स और उसके लिए आपको एनालिसिस करना था डेटा के लिए. सो यू कैन डू इट इन वन क्लिक ओनली यूजिंग अ ओल्ड फॉर्मूला. यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्रिएट किया है. So you need to create a formula first here and you can use it in the table. That is called as a data table. अभी हमने क्या किया? कॉलम के लिए यूज किया. सपोज here price is different, यहाँ quantity different थी. Okay, now I will show you for the row also. Suppose here price is different. I will take the price. Okay, if suppose price है अभी 70 थी, price may be the 75, price may be the 80, price may be the 82, price may be the 90 or price may be the 100. Price vary है. Okay, for that we want to calculate a total sale. Okay, I want to calculate a total sale. Why ये empty क्यों रखा है हमने? यहाँ हमें old value देनी है. करेक्ट, इसलिए हमने ये कॉलम empty रखा है. old value जो है total sale की, वो हमें यूज करनी है. Without this old value we can't calculate the new values. Why we are putting a old value every time? Because there is a formula with old value. Correct? That's why I'm giving a reference for old value. Again, we'll give the reference for old value is equal to what? Click on this cell and press enter. So I have given a reference for the old value. Correct? Now I have put a price in horizontal manner, means in a row, not in column. Quantity was in column, price is in row, because I want to show you a row wise calculation also. Okay, now I will select the data. Okay, see carefully student. I have select the data, then I click on data, what if analysis and data table. Now where is our data? Not in column. Instead of column, our data is in row input cell. Correct? So we will click on this. Then what we want to take? Price. So from the old table we will take a price, close it and okay.
So what happened? For the remaining data, the total sale will come automatically. This is old sale. So we can compare our old sale with the new sale. Correct? एनालिसिस उसके लिए तो करते हैं हम. अगर ये चेंज किया प्राइस, राइस की प्राइस, इफ आई हैव चेंज, देन व्हाट विल बी द माय सेल. ओके, गॉट इट स्टूडेंट? Yes, ma'am. Shall I repeat or no need to repeat? आप कर रहे हैं क्या मेरे साथ? कौन कौन कर रहा है? Yes, ma'am, we are doing it. Yes, Yeah. ma'am. I'm doing. Okay, okay. Finish then. ये करना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि सिर्फ सुनने से आपको आएगा नहीं. Unless and until you do the practice on this. आपको बहुत बड़े बड़े शीट्स पे भी प्रैक्टिस करना जरूरी है. अगर आपका ये ऑफलाइन होता तो हम लैब में वगैरह प्रैक्टिस कर सकते थे. Right now it is online. That's why I don't know, are you doing or not? Are you attending seriously or not? I don't know that. Okay. So if my data is ready, at any time I can check my values. Yes or no? Here if I'll change my value, I can get the total sale also. If I'll put here 60 price, then I can get here the changed value. Correct? The next thing in this what if analysis, that is scenario analysis. What is it? It is scenario analysis. So what is in scenario analysis? See, जैसे कि अभी in one shop, suppose there is a cloth shop is there, okay, and there are many employees in this cloth shop, and they are working on the one machine only. There is only one computer in one shop, and there are 5 employees who are working alternately on one machine only. If they have done some sale or some work, they will enter the data and go. Second one will come, he will enter the data and will go. Okay, many times such thing happened. But what happened? आपने जो डेटा क्रिएट किया है उस पर अगर किसी और ने चेंजेस किए तो आपका डेटा मिस हो सकता है. इफ मैंने मेरा जो वर्क था उसमें मैंने एनालिसिस करके रखा है मेरा ये, okay, I have done analysis and save it, but after me somebody will sit on my machine and again he can open the file because he has rights. So if he has do some changes in my file, then what to do? Next day मुझे उस पर वर्क करना था और मुझे प्रीवियस ही डेटा चाहिए जिसमें मैंने वर्क किया था. So what to do? At that time, scenario analysis will work. So how it will work, we will see. Okay. For that, we will select the data.
whatever data, suppose I want that this is my main data जहाँ पे फॉर्मूला है मेरा, करेक्ट. सो मैंने क्या किया, ये किसी ने चेंज नहीं करना चाहिए. ये अगर चेंज किया तो सभी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मुझे याद भी नहीं रखना है वो कौन सी वैल्यूज है. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल select this much data. Okay, then click on data, what if analysis. Okay, then click on scenario manager. Okay, so I will click on add. So give the name for scenario analysis. Suppose I have created this data on what day, today is Saturday. Okay, Saturday record, सैटरडे सेल, और यू कैन से सैटरडे सेल. आज मैंने क्रिएट किया, इसको मैंने सैटरडे सेल करके नाम दे दिया है. कौन सा डेटा, दिस ओनली 260 एंड 70, क्वांटिटी एंड प्राइस मुझे सिर्फ सेव करके रखनी है. ओके, सो क्लिक ऑन ओके. आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके और एंड क्लिक ऑन ऐड. तो ऐड हो गया. ओके, now I'll click on cancel. So which name, with which name this record gets a Saturday sale. Now I will close it. Okay, अभी मैंने ये करके रखा है. नेक्स्ट डे और आफ्टर 1 hour some other employee will come here and he will make changes here. Any changes, तो क्या हुआ, सभी वैल्यूज भी चेंज हो गई मेरी. नेक्स्ट डे मैं आई, फिर से मेरे मशीन पे बैठी, तो मुझे सब वैल्यू चेंज नजर आ रही. किसी ने जानबूझ के मेरे वैल्यू चेंज किया, ऐसा भी हो सकता है. सो व्हाट टू डू, या फिर उसको वर्क करना था, उसने उसका वर्क किया इस पे और चला गया. आई वांट माय रिकॉर्ड अगेन. सो व्हाट टू डू, अगेन go into data, click on what if analysis, scenario manager. Here there is a Saturday sale. So click on Saturday sale and click on show. As soon as I click on show, my original value and original data comes again. Are you getting? Shall I repeat it? Ma'am, in case that person has saved his data, still we can get our data back Yeah, with yeah. this option. Yes. Okay. Even if he had saved, then also no problem, because we have created na scenario manager. That is the function of scenario manager. Okay, ma'am. करेक्ट, सेव भी किया ना उसने. अभी ऐसा है कि इसी डेटा पे मल्टीपल लोग भी काम कर सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम. लेकिन मुझे मेरा जो मैंने सेव किया था वही मुझे आज चाहिए काम करने के लिए. ओके, तो सेम शीट है, आप 10 लोग यूज कर सकते हैं. सो व्हाट ही विल डू, ही विल सेव सिनेरियो मैनेजर विथ हिज नेम और विद द डेट, या फिर जानबूझ के भी कोई चेंज कर सकता है, इसलिए. ओके, इवन इफ ही सेव नो प्रॉब्लम, यू कैन गो हियर इन डेटा, क्लिक ऑन सिनेरियो मैनेजर, जो भी आपका जितना भी है आप ऐड करते जाओगे. यहाँ बहुत सारे लिस्ट आएगी जितना नाम का है आपका. अभी सैटरडे का सेल मैंने किया, फिर मुझे कल का संडे का सेल चेंज होगा मेरा. सो आई कैन क्रिएट अ सिनेरियो मैनेजर फॉर संडे सेल आल्सो. And whenever I want, I will click on this and click on show. It will come automatically. Got it? Yes, ma'am. थोड़ा टफ है. तो यही जो सेल and give those things and only you can ask me
सॉरी स्टूडेंट, मेरे यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू, फिर से ज्वाइन किया है जूम. कैन यू व्यू माय स्क्रीन? Yes, ma'am. Any difficulty is there? No, ma'am. Okay, practice किया. Yes, ma'am, we are doing it. Okay, so for today it's enough. I think we have to stop here only, क्योंकि next जो part है lookup सिखाना है आपको, heavy हो जाएगा ये और वो mix हो जाएगा. Lookup, VLOOKUP and HLOOKUP. It is also very important and nice part, interesting part. So tomorrow we will see a lookup, VLOOKUP and HLOOKUP. Okay. So do practice on this today. Okay. Good night, Yes, students. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Welcome.